Good morning, everyone. Good morning. Yes, Mayurji, I just unmuted myself. I hope I am clearly visible and audible. Good morning, Imranji. Good morning. We will be starting the session in a minute or so. We are just waiting for our expert Dev sir to join in, and then we are good to go. Correct morning, ladies and gentlemen. We will start the session within a minute. Yesterday we gave a BTST and it is in profit right now. Hope आप सबने BTST में profits book किए हो. Yes, Mayuri, the pancakes was in loss, but we have to look at the overall picture. We never deny कि हमारा yesterday session was in loss. Morning session was in profit. Afternoon में we had some people made profit, but overall the trade was in loss. But BTST में we made a good profit. Okay, Dev sir is here. Let's start the session. Good morning, Dev sir. I hope you can hear me. So hi Anuj, hope I'm audible too. Good morning. Yes, sir, you are clearly audible, visible, and your screen is visible. We can see the Nifty 50 index. So I guess there is a network glitch at Dev sir's end. Let me just check in with him once. Dev sir, can you hear me? Yes, Mayuji doing the same. He is joining back within a minute. Jerry ji, we will definitely update on that. No need to worry. Let's just wait for Dev sir to join back. Dev sir is here. I guess I dropped. So good morning. Let's begin, Anuj. Are we good Yes, to? sir. So let's begin with the market. Currently looking towards Nifty 50 around 0.18% on the upside. Same goes with Bank Nifty, same 0.18, 0.20% on the upside. Sensex 0.24% on the upside. And talking about few counters, the focus will be on PSE and CPSE today. We'll be focusing on PSE index and CPSE index. And the railway counters, we have seen a good momentum in last few trading sessions today as well. We saw RVNL going up by 8 to 9% in the morning. And talking about RVNL right now, let me check. It actually corrected a little bit. Yeah. So by the time market opened, we saw RVNL going almost up by 7 to 8% right now on a flattish situation where we see RVNL standing around 0.70% on the upside, which means RVNL has come down by 6 to 7% in within just 15 to 20 minutes of the market opening. So yes, I may say there's some booking going on right now because अगर आप देखो सुबह 7 to 8% अगर open होता है stock and by 15 minutes अगर वो flattish हो जाता है तो it means we have seen some profit booking in it. रेलवे काउंटर्स काफी चल गए हैं थोड़े ट्रेडिंग सेशंस में कल भी आपने देखा अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 to 20% के बीच में आरवीएनएल क्लोज्ड आई एंड other stocks as well IRFC RVNL. So railway is performing well, but we might see some booking over there. So आज के लिए जो हमारा इंडेक्स फोकस में रहेगा, जो हमारे दो इंडाइसेस फोकस में रहेंगे वो होगा CPSE एंड PSE. सो उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत काउंटर्स मैं आपको बता देता हूँ which you need to add in your watch list for the day. Few of them are BHEL, BHEL, BHEL,
Then we'll be focusing on GAIL as well, GAIL. Then we can also focus on, let me check. ONGC also looks good. Currently on a flattish situation, but we might see some movement. ONGC. And another one, talking about a middle sector stock, NMDC. NMDC, ONGC, GAIL, that is GAIL and BHEL, BHEL, not BEL, BHEL. So these are a few counters we need to, add in our watch list for the day. Talking about few stocks, NBCC can also be in focus. And talking about the indices, let's go ahead with the levels first. Team, please note down the levels. Nifty immediate support will be at around 24,200. Then at 24,050. While resistance at 24,500. Then at 24,600. Bank Nifty, talking about Bank Nifty support at 52,000. Then at 51,900. While resistance at 52,650. Then at 52,800. Talking about Fin Nifty, today's expiry support will be at around 23,580. Then at 23,550. Resistance at around 23,680. Then at 23,720. Hope, Anuj, you were able to capture it and pin it down. Yes, sir. Yeah. So moving forward, to some queries, we'll take some few queries, and I'll also be, giving a trade before going. So tracking the trades for now. Till then, we can move ahead with the queries, Anuj. Sir, Ircon was given as a CDI yesterday. Okay. So your view on that? Let me check. Firstly, I would like you all to know about what is CDI. I know you all have been with us from a very long time. आप लोग हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए. But जो यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता दूं, CDI is conviction delivery idea. वो कोई BTST या intraday trade नहीं है. It is a swing trade wherein it is meant for few weeks. So अभी मैं बता दूं, आज का situation अगर कल CDI दिया, आज का situation is almost 1% on the downside. But still we need to wait in it because it is a few weeks trade and not a BTST trade. So ऊपर की साइड में इसमें हम एक रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं अराउंड 330 329 लेवल्स. अगर ये 329 के ऊपर ब्रेक करता है, we might see fresher levels around 332 plus. Sir, your view on M&M? So currently at around 1% on the upside, and talking about the last 15-minute candle, let me open the chart over here. I'm sorry. So talking about this particular 15-minute, previous 15-minute chart, we have seen, a volume spike over there, and we have seen that the momentum has come, after opening, we saw momentum of almost 1.2% on the upper side. So right now, if technically I would speak that it is currently positive, and the current resistance will be 2899 on the upper side. A 10-point gap on the upper side, and downside we might see a support of around 2860. Sir, ITC, your view on ITC and क्या hold करना चाहिए अभी? देखिए, अगर आप ITC अगर बात कर रहे हो तो पोर्टफोलियो अगर आपने होल्ड कर रखा है, सो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. ITC को अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है आपने, सो उसमें कोई आपको इश्यू नहीं आना चाहिए. इट इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक. बाकी अगर आप थोड़ा बहुत अगर मुझे स्विंग्स में बात करें तो मैं आपको रेंज बता देता हूँ. ऊपर की साइड पे द रेंज विल बी, गिव मी अ मोमेंट. सो ऊपर की साइड पे द रेंज विल बी अराउंड 450. 5 पॉइंट्स दूर ही इसका रेजिस्टेंस है. सो 450 का ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस रहेगा इसमें हमारा.
and नीचे की side पे it will be around the 439 levels. Sir, your view on MGL? MGL. Someone on the floor was also asking me about MGL. I just told them that technically we see that stock positive for now. Around 1680 अभी चल रहा है, and I would say नीचे की साइड पे 1650 के पास आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 30 पॉइंट्स नीचे से, and ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस विल बी 1750. 1750 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. So if it breaks, we'll see fresher levels above 1850, 1800. Sir, ITDC buying at 861. 861. So currently जो हमारे जिन्होंने भी एक क्वेरी पूछा है उनका पोजीशन तो प्रॉफिट में है. I would recommend to trail the stop loss at around 875 level, and ऊपर की साइड पे आप इसको 890 प्लस जाता है तो 895 900 के आसपास उसको बुक कर लीजिए. 900 तक भी अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो नीचे से स्टॉप लॉस आप उस हिसाब से अपने पॉइंट्स के हिसाब से रिवाइज करके स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं. ये फिलहाल ये ट्रेड में. Sir, advice on Oil India? Oil India, yes. So अगर हमारे ये जो क्लाइंट है जिन्होंने पूछा है वो अगर स्टार्ट ऑफ द सेशन से हमारे साथ है तो ही मस्ट हैव नोटिस मैंने ऑयल इंडिया का जिक्र किया है. यहाँ पे ऑयल इंडिया, ONGC, BHEL which are in focus for the day in our watch list. So oil India is positive for now. PSE फोकस में है, उस वजह से ऑयल पे भी फोकस रहेगा. So yes, it is positive for now. Before we move forward, Anuj, let me give a trade for intraday. NHPC, I told you हमारा PSE इंडेक्स फोकस में है. NHPC रहेगा. करंट प्राइस जो हमारा है वो भी आप नोट डाउन करिएगा इस बार प्लीज. करंट मार्केट रेट है 106.51. कंसिडर इट एट 106.50. स्टॉप लॉस विल बी 104 and target will be 111.50. 11150. You have seen a spike in the volume in NHPC. That's the reason of initiating this trade. Guys, we have shared the trade in comment. हमने पिन भी कर दिया है. One more we can add, JK paper. Okay. JK paper current market rate is 584.7. Stop loss will be 572 and target will be 610. So we can go ahead with the queries till then. We have given 2 trades. Yeah. So, sir, going back to the queries, Artemis Medicare. आर्टेमिस मेडिकेयर पे जाएंगे. मैं एक और चीज बता दूं जहां पे मैंने अपना वॉच लिस्ट बना के रखा है. आईसी पेपर स्टॉक्स जो है, पेपर रिलेटेड स्टॉक्स जो भी है, currently each and every stock is looking very strong. So I would ask everyone to focus on JK paper more for now. So it is a very high conviction trade for now, JK paper. Please आप अगर हमारे सेशंस में ज्वाइन करके ट्रेड लेते हैं, so I would recommend JK paper is very strong for now. सारे पेपर स्टॉक्स में वॉल्यूम इंक्रीज देखा है हमने. जस्ट यहाँ पे मेरे हर एक ट्रैकर्स पे दिखा रहा है पेपर स्टॉक्स. So I would recommend काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. Yeah, sorry. Again, which stock? Artemis Medicare.
Can you help me with the spelling, please? ARTEMIS. Medicare. This one. Currently on a 1% upside situation, technically seems positive on a daily chart. ऊपर की साइड पे अगर ये 193 194 लेवल ब्रेक करता है तो आपको फ्रेशर लेवल्स 200 205 तक दिख सकते हैं. अपर साइड रेजिस्टेंस एट 200 फॉर नाउ. नीचे की साइड पे इसका सपोर्ट मेंटेन होगा अराउंड एट 178 लेवल्स. So can we exit railway stocks now and re-enter next week before budget or hold till budget? See, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. बजट हैज been good for railway, been good for infra. So ऐसा है कि अगर आप वेरी सेफ ट्रेडर हो तो आप अभी एग्जिट करके बजट के बाद एंटर कर सकते हो, बट यू माइट मिस दैट मोमेंटम. बट अगर आप यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क, जहाँ पे अगर बजट में थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है, यू आर रेडी टू टेक दैट हिट, तो आप होल्ड करके रखिए. बिकॉज दैट्स अ बेट वेयर इन it's like election results. You know there's going to be an outcome, but you don't know what's going to be the outcome, right? So आपको पता है एक आउटकम आने वाला है बजट में, whether it will be positive impact or negative impact, but you don't know कि वो कौन सा होने वाला है. In that situation, you need to take a risk. अगर आप रिस्क लेने रेडी हो, जहाँ पर अगर आप होल्ड करते हो तो आपको सामने उतना मोमेंटम मिलेगा अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है तो इन द रेलवे काउंटर्स. या तो अगर आप बहुत सेफ एंड यू आर रेडी टू मिस द मोमेंटम जो आ सकता है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो मैं आपको कहूंगा अभी एग्जिट लेके आप बजट के बाद री-एंटर कर सकते हो. दिस यू कैन डू एवरी टाइम व्हेन यू नो देयर इज एन इवेंट. यू कैन डू दिस इफ यू आर वेरी सेफ ट्रेडर. बात करेंगे रेलवे काउंटर्स की तो काफी ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है, आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो. अदरवाइज अनदर एडवाइस विल बी आप हाफ बुक कर लीजिए आपका क्वांटिटीज और हाफ आप पोर्टफोलियो में रहने दीजिए, और वो बजट के बाद आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वापस बाय बैक कर सकते हैं. So next we have is Nalco. नाल्को अगेन आज के जो हमारा फोकस्ड सेक्टर है, आई गेस उसके आसपास ही कहीं का है, नॉट एग्जैक्टली. सो आई गेस यू टॉकिंग अबाउट नेशनल एल्यूमिनियम. लेट मी चेक. मतलब आई वुड से टेक्निकली करंटली 206 के आसपास चल रहा है. या सो आई वुड रेकमेंड, अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो 200 के लेवल से आप इसको बाय करिए, बेटर रहेगा. एक 6 रुपए का करेक्शन देखने दीजिए. और अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो आई वुड रेकमेंड इसका नीचे की साइड पे इमीडिएट सपोर्ट इज एट अराउंड 195 200 एंड अपर साइड रेजिस्टेंस एट अराउंड 209 लेवल्स. So next we have is Irida. So IREDA और हुडको बीच में आई सॉ न्यूज जहां पे there were assumptions that it can be considered for some tax slab saving thing, but I'm not sure. और उसी मोमेंटम की वजह से उसमें बहुत ये उसी न्यूज की वजह से उसमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने मिला था हुडको और IREDA में कि there are considerations for some policy for IREDA and हुडको. बट अभी थोड़ा बहुत आज नीचे है, 1.7% से नीचे है. बट ओवरऑल आई वुड रेकमेंड कि आप इसे बाय कर सकते हैं. नीचे की साइड पे इसका सपोर्ट होगा अराउंड 230 एंड ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस विल बी अराउंड एट 265 270 लेवल्स. So Zomato. जोमेटो आज के लिए काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. अगर आप आज इंट्राडे भी करना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है करंटली एट अराउंड 212. आई वुड रेकमेंड अगर इंट्राडे कर रहे हो तो ऊपर की साइड पे आप इसको टारगेट मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 218 220 एंड नीचे की साइड पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 207 के पास अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो. अदरवाइज अगर आप स्विंग का पूछ रहे हो तो पॉजिटिव है काउंटर. Sir, update on the trades intraday that you have given. Sure.
So I guess we gave NHPC at around 106.5, currently at 106.7. So kind of flattish for now. और intraday trade है, इतना जल्दी भी momentum नहीं आएगा. And talking about JK paper 584.7 पर दिया था, 584.5 चल रहा है. But ये ऊपर की सेट पे 587, 589 अभी जस्ट जाके आया है. Around एक 4 से 5 पॉइंट का ऊपर की सेट पे मोमेंटम देखे है. But I would not consider it as profit for now. सो आप होल्ड करिए. दोनों ही ट्रेड अपने बाइंग के पास चल रहे हैं. जेके पेपर 285 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 30 पैसा ऑन द अपसाइड. एंड एनएचपीसी 106.70 जो एग्जैक्ट हमारा बाइंग रेट है वही. सो दोनों ही हमारे एग्जैक्ट बाइंग पे है, ना ऊपर है ना नीचे है. सो कीप ऑन होल्डिंग गाइस, वी माइट सी मोमेंटम सून. सर बजाज ऑटो होल्डिंग एट 6900. Bajaj Auto holding at 6900. Yes. सो मैं तो आपको एक ही चीज रेकमेंड करूंगा. आपका काफी अच्छा बाइंग है. आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और 9200 9300 तक आप अपना स्टॉप लॉस लाके रख सकते हैं. या तो एक मैं आपको कहूंगा 9000 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लाके रख सकते हैं. एंड आप होल्ड कीजिए इसको फॉर अ लॉन्गर टाइम. एट द एंड आपको प्रॉफिट में एंड करेगा. So we on Motherson bought at 206. ठीक है. मदरसन लुक स्ट्रॉन्ग. टॉकिंग अबाउट डेली चार्ट अगेन, ऊपर की साइड पे 210 ब्रेक करता है. यू माइट सी फ्रेशर लेवल्स 225 230. एंड नीचे की साइड पे इसका सपोर्ट रहेगा एट अराउंड 187 188. Sir, suggest consumer stocks and fertilizer stocks for budget. So actually yes, I was going to say this कि हमारा जो बजट में हम वी आर थिंकिंग फॉर थीमेटिक प्ले विच विल बी फर्टिलाइजर्स, जिसमें ये जो हमारे दो स्टॉक्स है आप इसको फोकस में रख सकते हैं. एक है फैक्ट और एक है चंबल फर्टिलाइजर. सो ये दो स्टॉक्स आप फोकस में रख सकते हैं, फैक्ट एंड चंबल फर्टिलाइजर. So next we have is I guess we have taken a lot of queries. Satya Industries bought at 141. Yeah, I'll go ahead with the Satya Industry query. Then I would recommend अगर कोई apart from stock query है तो वो भी हम ले सकते हैं. सर आपने चंबल बताया और कौन सा बताया था चंबल के साथ में? फैक्ट, FACT. फैक्ट का एक और फैक्ट आपको बताता हूँ. अराउंड आई गेस डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, या 1.5 साल पहले फैक्ट में एक समय पे ऐसा था वो जो उसमें एक मोमेंटम था. ईच एंड एवरी डे इट यूज्ड टू क्रॉस इट्स अपर सर्किट. वहां पे रोज अपर सर्किट लगता था. पहले वो 20% का था, फिर वो 10% का हुआ. एंड वो जो एक 1.5 साल पहले का मोमेंटम था, पहले साथिया इंडस्ट्री का मैं बता देता हूँ जिन्होंने पूछा वरना मिस आउट हो जाएगा. टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, 140 चल रहा है. आप इसको 160 तक होल्ड करिए. नीचे की साइड पे 129 का इसका सपोर्ट रहेगा. तो मैं फैक्ट का आपको बता रहा था. फैक्ट में एक 1.5 साल पहले का आपको एक मोमेंटम बताता हूँ. देखिए ये जो 1.5 साल भी नहीं, अभी 1 साल ऑलमोस्ट वेयर इज द मोमेंटम. बट ये पर्टिकुलर मैं आपको जो बता रहा हूँ जो ग्रैब किया था जैन के आसपास, ये जो आई वुड से नॉट जैन, दिस पर्टिकुलर थिंग 2023 में सितंबर के पास
आपको पता ही होगा सितंबर है, फिर सितंबर के बाद भी एक दो मंथ्स है, दीज आर नोन एज फर्टिलाइजर मंथ्स, जहाँ पे सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स काफी चलते हैं, क्योंकि दीज आर दी हार्वेस्टिंग मंथ्स, जहाँ पे हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। सो दीज वर दी टाइम व्हेन, जहाँ पे आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर आपको एक बड़ा सा वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है डेली चार्ट में। सो ये वो टाइम था 2023 में अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, जहाँ पे फैट बहुत कंटिन्यूस मोमेंटम दे रहा था। आप वॉल्यूम स्पाइक ऑलरेडी देख पा रहे हो। सो दिस इज जस्ट अपडेट आई वांटेड टू शेयर कि ये मोमेंटम एक 1.5-2 साल में ही आया है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, एंड वहां से फिर इसने अपना मोमेंटम मेंटेन किया है। सो फैक्ट एंड चंबल विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर फर्टिलाइजर्स। So Apollo Tyres bought at 540. फाइव फोर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक इफ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज यू, आप सपोर्ट इसका 510 पे मेंटेन करिए, एंड ऊपर की साइड पे इसका अगर 545 ब्रेक होता है तो आपको फ्रेशर लेवल्स 560 तक दिख सकते हैं। So I guess we will take one last query for the day, and then we will call it. We have shared 2 intraday trades already. Sir, HDFC Life. HDFC Life. टेक्निकली पॉजिटिव, अपर साइड 640 तक का मोमेंटम लग रहा है यहाँ से, एंड नीचे की साइड पे स्टॉप लॉस यू शुड मेंटेन अराउंड 600 लेवल्स। सो 1:1 ट्रेड बनेगा आपका, 20 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट ऊपर का इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। So guys, we would end the session here. If I just sum up, we have given one CDI NBCC, हमने 2 intraday trades दिए NHPC and JK Paper. Apart from that, the stocks on radars are BHEL, GAIL, ONGC, and MDC. So that will be all for the day. And also we did mention that GAIL is a technical pick for the day. If you have more queries, feel free to drop it on Stockholm. Our experts would be happy to help. And now we have a new channel, Ask Piyush. Dheere dheere we are, changing the experts where you can get your queries answered. And also don't forget to join in today at 2:30 p.m. for the FinNifty expiry with our expert Nikun sir. Thank you, Dev sir. And we hope जो आपने analysis किया है and the trade you have given intraday दोनों profit हो. Thank you everyone.